Hello friends, myself Maipasi Parmar. I am working as an assistant professor in Lakshmi Institute of Technology, Sarigam, run by Gajara Trust. Friends, in this lecture we are going to study the compounding of steam turbine. In last lecture we have studied that what is the working principle of impulse turbine, and then we have also studied the merits and demerits of the steam turbine, simple impulse turbine, और फिर हमने देखा था that is application of steam turbine. तो फ्रेंड्स आपने वो वीडियो देखा तो आपको पता है कि हमने जब वर्किंग देखा था सिंपल इम्पल्स टर्बाइन का, तो उसके अंदर हमने डीमेरिट्स और मेरिट्स भी पढ़े थे, राइट. उसका डिसएडवांटेज भी पढ़ा था. तो उस डिसएडवांटेज में हमने एक डिसएडवांटेज पढ़ा था, दैट इज हाई रोटेशनल स्पीड और हाई रोटर स्पीड. I think it is around 30,000 rpm of your rotor speed. So to handle such a high speed, use we have to use the reduction gearing arrangement if we want to use this turbine in a somewhere where the lower speed is required. And second disadvantage जो हमने पढ़ा था, that is high energy loss. That means the exit velocity of a steam which is very high when it comes out from the moving blade. So your loss of energy is very high. So to control this to reduce this both the losses, there are several methods by which we can reduce. So the reduction of this rotor speed, it is called the compounding. So this is done to, so let's start to understand the compounding of steam turbine. This is done to reduce the rotational speed of the impulse turbine to the practical limits. यानी कि आपका जो रोटर स्पीड है उसको हम कम करेंगे जितना हमें चाहिए. So the compounding is achieved by using the more than one set of nozzles and a blades and a rotors in a series keyed to a common shaft, so that either the steam pressure or a jet velocity is absorbed by the turbine in a stages. As we have discussed that there is a one set of nozzle or a one set of moving blade, it complete your one stage. But here we are using the more than one set of nozzle, blades and rotors which are कीड ऑन अ कॉमन शाफ्ट, यानी कि उन सबको हम एक कॉमन शाफ्ट के ऊपर फिक्स करेंगे और फिर स्टीम को फ्लो कराएंगे और फिर स्टीम प्रेशर और जेट वेलोसिटी को रिड्यूस करेंगे. सो दिस इज द मेथड ऑफ कंपाउंडिंग. बेसिकली देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ कंपाउंडेड इम्पल्स टर्बाइन व्हिच आर प्रेशर कंपाउंडेड, वेलोसिटी कंपाउंडेड एंड प्रेशर एंड वेलोसिटी कंपाउंडेड. फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज प्रेशर कंपाउंडेड, उसके बाद जो हमारा वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे velocity compounded and a pressure and velocity compounded. So let us start to understand what is pressure compounded impulse turbine. Now pressure compounded, here you can see the figure of your pressure compounded impulse turbine. I think आप सबको पता है कि अभी what are the three different parts of this figure. It is upper part, that is the middle part, and this is the lower part. And you also know that what this upper part shows, what is this middle part shows, and what is the bottom part shows. This shows the different body parts of your steam turbine, that the nozzle, फिर moving blades, फिर rotor, shaft and casings. And this middle part, it shows the development of your nozzle, moving blade, that is what is its shapes look like. And the third, that is bottom part, it shows the change in pressure and velocity of a steam turbine. Okay, sorry, change in velocity and pressure of your steam when it flows through the nozzle. Okay, nozzle and moving blade. So let us understand what is the pressure compounded. In this type of turbine, the whole pressure drop from the steam chest pressure to the condenser pressure divides into a series of smaller pressure drops across the many stages of a impulse turbine. Thus it is called the pressure compounded impulse turbine. फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या है? पूरे स्टेटमेंट बहुत लंबा स्टेटमेंट है. इसको हम समझे तो जो भी प्रेशर ड्रॉप होगा आपका, ओके, from the steam pressure to the steam pressure chest to the condenser pressure, वो बहुत सारे स्टेजेस में होगा. यानी कि फर्स्ट स्टेज आपका ये नोजल, उसमें एक बार प्रेशर कम हो गया, फिर मूविंग ब्लेड में कम रहेगा, फिर दूसरा जो नोजल का सीरीज आएगा उसमें फिर से आपका प्रेशर कम हो रहा है, राइट. सो ऐसे मल्टीपल स्टेजेस में आपका प्रेशर हम रिड्यूस करेंगे. समझ में आ रहा है? तो दिस इज कॉल्ड द प्रेशर कंपाउंडेड इम्पल्स टर्बाइन. One row of nozzle and one row of moving blades, which is termed as a stage of impulse stage of the turbine. यानी कि ये एक आपका सीरीज होगा नोजल का और ये एक मूविंग ब्लेड होगा, तो ये आपका एक फॉर्म करता है, आपका एक सिंगल स्टेज कंप्लीट करता है, राइट. सो हियर यू कैन सी देयर आर मल्टी स्टेज टर्बाइन. दिस इज द सिंगल स्टेज, दिस इज द सेकंड स्टेज, दिस इज द थर्ड स्टेज एंड सो ऑन. द प्रेशर एंड वेलोसिटी वेरिएशन इज शोन इन फिगर. The steam from the boiler which is enters the first row of nozzle where its pressure reduces partially
एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस। यानी कि जो भी आपका स्टीम है नोजल बाहर आ रहा है ओके बॉयलर से, उसको वो पहले नोजल के अंदर से फ्लो होगा। तो जब वो स्टीम आपका नोजल से फ्लो हो रहा है तो आपका प्रेशर कम हो रहा है ड्यू टू द एक्सपांशन ऑफ स्टीम, आपका नोजल के अंदर प्रेशर कम हो रहा है और उसी वक्त ड्यू टू द एक्सपांशन आपका वेलोसिटी नोजल के अंदर बढ़ रहा है। और उसके बाद यहाँ पे हमने गैप प्रोवाइड किया है, सेम एजम्पशंस हम यहाँ पे भी ले रहे हैं जो हमने इम्पल्स टर्बाइन में लिए थे, दैट the pressure drop or a velocity drop remain constant between the gap provided between the nozzle and moving blade. Now when the steam flows to this moving blade, your pressure drop remain constant, यानी कि moving blade में आपका pressure drop नहीं होगा, बट जो velocity बढ़ा है ओके steam का जो velocity बढ़ा है जब वो steam moving blade के ऊपर से flow होगा तो उसका steam का kinetic energy आपका moving blade absorb करेगा राइट, और moving blade का speed बढ़ेगा और आपका जो रोटर है उसका स्पीड बढ़ेगा और एट द एंड शाफ्ट का स्पीड बढ़ेगा। यानी कि काइनेटिक एनर्जी आपका स्टीम का एब्जॉर्ब कर रहा है रोटर और आपका काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कम हो रहा है मूविंग ब्लेड में। एज यू कैन सी इन द फिगर योर मूविंग ब्लेड योर काइनेटिक एनर्जी इज रिड्यूस। अब जब आपका फिर से नोजल में अंदर आपका स्टीम एंटर होगा यानी कि मूविंग ब्लेड के बाद फिर से यानी कि दूसरे स्टेज में जब आपका स्टीम नोजल के अंदर एंटर होगा फिर से आपका प्रेशर कम हो रहा है यहाँ पे और यू कैन सी इन दिस स्टेज नोजल आपका वेलोसिटी फिर से बढ़ रहा है ओके। सो ऐसे सब स्टेज में होगा यानी कि आपका मूविंग ब्लेड में आएगा तो आपका जो भी प्रेशर है वो सेम रहेगा और आपका वेलोसिटी जो कम होगा और जैसे ही नोजल में जाएगा आपका प्रेशर कम होगा और वेलोसिटी बढ़ेगा ओके। सो ऐसे करके आपका जो भी स्टीम प्रेशर है कम ओके बॉयलर प्रेशर वो पूरा रिड्यूस होते होते कंडेंसर प्रेशर में आ जाएगा। सो दिस इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इन विच by which we can reduce the pressure from a boiler pressure to the condenser pressure. So वही लिखा है ये पूरे स्टेटमेंट that the steam from the boiler enters the first row of nozzle and when its pressure reduces partially and its velocity increases and then it passes over the first row of moving blade where nearly all its velocity is absorbed and its pressure remains constant, यानी कि moving blade में आपका pressure constant रहेगा। Now the exhaust steam from the first row of moving blade enters the next nozzle row, यानी कि जो भी यहाँ से आपका एग्जॉस्ट आ रहा है ओके मूविंग ब्लेड से जो भी आपका एग्जॉस्ट स्टीम आ रहा है वो कौन से दूसरे स्टेज में जाएगी कि जो सेकंड स्टेज का आपका नोजल है उसमें जाएगा यानी ओके which gets the now the steam again partially expand and its velocity again increases which gets the absorbed in the second row of moving blades and so on, यानी कि पूरा प्रोसेस चलता रहेगा जब तक आपका कंडेंसर प्रेशर नहीं अचीव करेगा। This turbine was invented by the professor Retiu and so it is known as the Retiu turbine. Friends, you have to remember this name. एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ये ऑब्जेक्टिव टाइप में या कोई भी ऐसे भी क्वेश्चन आता है यदि एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ Retiu turbine तो आपको क्या एक्सप्लेन करना है दिस प्रेशर कंपाउंडेड टर्बाइन ओके। Now in this turbine the ratio of a blade velocity to the steam velocity remain constant, so this is the most efficient type of a impulse turbine, यानी कि इसके अंदर जो ब्लेड वेलोसिटी है और स्टीम वेलोसिटी उसका रेशियो हम कांस्टेंट रखेंगे सो हम मैक्सिमम एफिशिएंटली आपका ये वर्क करेगा ओके। बट इट इज वेरी कॉस्टली एज इट इज अ very large number of stages. As you can see that there are number of stages we have to use to reduce the pressure from the steam pressure just to the condenser pressure, so it's very costly. Friends, I hope you understand what is pressure compounded steam turbine. अगर आपने मेरे अगले वीडियो नहीं देखे इट इज सिंपल वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ सिंपल इम्पल्स टर्बाइन, आप एक बार वो देख लीजिए तो आपको ये प्रेशर कंपाउंडेड और अभी आगे जो आने वाले दैट इज वेलोसिटी कंपाउंडेड और प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडेड उसमें समझने में आसानी रहेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।